Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Happy Holi to each and every one of the family members of TTS. Keep the charts clean. We'll start the learnings and screening execution within next 2 minutes. Happy Holi, Tosif. Good morning, Samath. Good morning, Mahesh. Good morning, Nilesh. Hit the like button, guys. So, no Indian markets today. Yes. Let's start with daily time frame. सर आपसे एक रिक्वेस्ट है आप आरआर लगाया करो सर अच्छा दिखता है चार्ट में नहीं तो सिर्फ इट्स अगेंस्ट आवर रूल एंड इंटीग्रिटी नहीं लगाएंगे सॉरी ओके लेट्स डू द स्क्रीनिंग पर्सपेक्टिव्स डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं राइट व्हाट इज द मेजर बायर्स अलोकेशन पॉइंट वाज दिस रेंज with this point of action हमें मेजर लिक्विडिटी एरिया कहाँ पे था इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मेजर एसएल्स थी राइट वो हंट हो चुकी है so do we have to mark no what is the next thing we'll be working over here we'll be allocating the demands the demand structures looks like this was the moment what we got इस मोमेंट के साथ कंटिन्यूटी में रिजेक्शन कितना लिया था ए पॉइंट ऑफ एक्शन है राइट अगर नोटिस करोगे मार्केट उतना ही रिजेक्शन लिया with that rejection market continued the movement okay जैसे ही मार्केट ने कंटिन्यू किया मार्केट ने सेकेंड कैंडल सेकेंड डे ब्रेक की थी सो वी विल एक्सटेंड दिस डिमांड एंड allocate it till 150% ओके सो जैसे ही allocation 150% में हुआ what is the next thing that we'll be working on we'll be working on daily time frames supply
दिस इज आवर मेजर सप्लाई अलोकेशन। उसके बाद मार्केट ने 3 दिन अच्छा खासा रुलाया था पीओआई रेंज में। रुलाने के बाद मार्केट कंटिन्यूड विद द रिट्रेसमेंट एंड गेव द मूवमेंट। राइट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट कितना मूवमेंट हमें देगा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन खत्म हो गया, सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्शन को अलोकेट करो। जैसे ही सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्शन अलोकेट करते हो, एक चीज याद रखना होगा आपको, अलोकेट 50%, विच इज 150% ऑफ द लेवल्स। राइट, so 150% of the levels marking होने के बाद let's come down to 4 hours to see the movement. राइट, 4 आवर्स में मार्केट में क्या हुआ था कल के दिन? उससे पहले लेट्स अलोकेट द सप्लाईज। सप्लाई वन ये थी हमारी, उसके साथ कंटिन्यूटी। मार्केट हैड गिवन अ सेकेंड राउंड ऑफ क्लोजर, सेकेंड राउंड ऑफ क्लोजर के साथ दिस इज द थर्ड राउंड विच मार्केट कंप्लीटेड। Right, post the market completion was done, what is the next point of action that we'll be working on over here? The next point of action that we'll be working on over here is the demands. This was the first demand ratio. With this demand, market gave the completion. Market यहाँ पे complete करके market इसी point of action से movement ऊपर के लिए generate की थी। Right? So जैसे ही market में यहाँ पे generation हुआ 4 hours में, what are the major circumstances that you will be marking out? So you will be marking out the mathematical number range. Excuse me. So उस mathematical range को mark करने के लिए हमें first चीज क्या चाहिए? The levels of MC2. And MC2 का levels कहाँ पे है at the current state of action? The current state of action में हमारा MC2 range आके swing high 0.1, swing high 0.2, swing high 0.3. राइट, हाई लो एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इसे अलोकेट करते हैं। राइट, व्हाट इज द स्विंग हाई? मार्केट इज करेंटली सेइंग 2895.700. राइट, व्हाट इज द स्विंग लो? 2858.188. what is the retracement point? Retracement point is 2883.499. What is the formulative numbers that you guys have got? The formulative number आप लोगों को जो मिला है that is 37512, गोल्डन रेशियो आके 2944, उसके बाद इंटरमीडिएट रेशियो आके 2958। टारगेट हिट हो गया राइट कल के दिन। तो we will move this point of action of swing high to this range, retracement point to this range and swing low to this point, जहाँ पे हमारा major level of allocation daily time frame का है। Right, in this scenario, what is the one number that you will be working at the current state? Swing high is 2927.881। अगर आपको और प्रिसाइसफुली चाहिए तो आप डायरेक्टली ये लेवल ले सकते हो। राइट, 2928। एक सेकेंड रुको। So the level of the swing high at the current range is 2930.47427. What is your swing low? 2930.427. Your swing low is at 2832.989. What is your retracement point? 2879.563. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got is 97.438. Golden ratio की 3037, intermediate ratio की 3074. 4 hours का level mark करता है। This is the next point of action where market in the swing trade will move.
The golden ratio is 30, 37.217. So these are the numbers what we will be looking for at the current stage of action plan. राइट जैसे ही हमारे पास करंट स्टेज ऑफ एक्शन प्लान जनरेट होते हुए दिखी है व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी वर्किंग ओवर हियर द नेक्स्ट थिंग विल बी वर्किंग ओवर हियर ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द 4 आवर्स राइट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ 4 आवर्स कहाँ पे मिला है आपको let's look into the structures which has been planned out as per the 11th of the March. Right, ये हमारा first supply of action है. With the first supply of action, we got the second movement allocated from the same point of action. जैसे ही completion यहाँ पे हुई, market ने retrace कितना लिया? जितना previous demand में supply generate होता है, उतना ही retracement point आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी. Right? Post that, what was the next retracement plan? The previous demand will work as your current demand. So this point of action में this was the action. Post that will multiply the range, right? Post multiplying the range, what do we notice over here? The movement has been completed and break करके sustain हुआ है, right? Sustainability कितना है? क्या हमारा previous candle के नीचे current red candle close हुआ है? नहीं. So इस point of action में market could hurt tend to hunt you down, right? So next level of allocations हम नहीं मार्क करने वाले हैं जब तक पूरा क्लोजर मार्केट में नहीं मिलेगा. Okay, so once 4 hours is done, next will come down to 1 hour. In 1 hour, what do we notice? Each and every point of interest markets has given the completion. So let's mark out the swing high, the swing low, and the retracement point and allot the numbers. Right, at this point of action हमारा swing high आके 2946.848 है. हमारा swing low आके 2905.786 है and हमारा retracement point आके 2934.068. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got is 41.062. With this plan of action, what is the next thing the market could tend to do? The market could move till the golden ratio, which is 3000, and intermediate ratio 3016. क्या यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है? क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है. नो, यहाँ पे मार्केट टारगेट हिट नहीं हुआ है. Then this current ratio is wrong. So we will come down to its previous numbers. Right? जैसे ही हम यहाँ पे previous number allocation पे आते हैं, let's see what the market has done at the current stage. The swing high is 2940.999. The swing low is 2906.786. Our retracement point over here is 2930.791. So at this current stage, what is the market done? The market has created a formulative number of 34.213. Golden ratio आके 2986.147 and intermediate ratio आके 29999. Are this number working in our spectrum? Yes, definitely these numbers are working in our spectrum. So let's allocate this point of action and sit in the market position. कोई डाउट्स है 1 आवर तक? Clear, sir. Okay, this is the 1 hour plan of actions that we'll be working at the current stage. Next आते हैं 30 minutes. Right? In 30 minutes, what the market has indicated? The market has indicated a movement on to the structures of a proper inducement. Yeah, no inducement. We do have an inducement over here. How does the inducement work at the current state?
If you guys notice कौन सा inducement follow कर रहा है market यहाँ पे? The market is following partner 1, partner 2, partner 3, right? A group market gave a break on top of it, created a candle inside it, and continuity. What scenario the market has generated at this point of action? The market has generated a plan of action of inducement S1 scenario 3, right? बेरिश मूवमेंट जनरेट होने से पहले एक फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट देके मार्केट उसके अंदर ही सस्टेन हुई, उसके साथ मार्केट अभी नीचे के लिए फॉल थ्रू दे रहा है, right? So hence this is the plan of action where 30 minutes is indicating market is at the current scenario bearish. कहाँ तक movement आएगा उसके लिए let's come down and look into the structures of 15 minutes. In 15 minutes plan of action, let's work on the numbers and see where exactly the market could come and take a rejection from. Okay, at this current stage, what do you notice? Do we have a retracement point to allocate at the current state? No, we don't have a retracement point to allocate at the current state. So what is the one thing market could tend to do at the current range? The current range, we can look for two plan of actions, which is one, following through the AMD setup, which is manipulations, accumulation manipulations and distribution के साथ एक trade off action, but वो हम देखते नहीं है most of the time पे. So let's allocate the reversal point of action, MC formula 1.0, right? What is the number of the reversal point at the current stage? 2993.853, right? 29, to be precise full, it is showing me as 2994.027, right? Square root of 2994.027 is 54.71000000. Value by raising the exponent and adding the major value of conclusion is currently sitting at the scenario point of 54.3427028. The exponent is raised by 2. The target of ours is currently looked at the circumstances 2953.129. Right? This is the current scenario that we'll be working on with the math and allocating the trades to the directions till the time the market doesn't create a scenario of MC 2.0. Right? जब MC 2.0 market create नहीं करता है, what is the next thing that we'll be working over here? We'll be waiting for the next price action to execute the trades. जो सुबह से scenario 2 के साथ execute किया है, well and good. दूसरे लोग wait for the next plan of action to market create the price. Okay. Any doubts in circumstances of gold? Please do ask. Current gold movement, can we call it a circulating supply? Is it in a parallel channel, Nilesh? Is the market in a parallel channel to call it in the zone?
If not, we cannot call it as a circulating supply, right? You can notice where was the eggshell created. Eggshell was created in this zone, right? No, it's not in the POI range, right? Eggshell identify karo. This was the circulating supply from this point of action, right? So this is the market where the market tend to hunt down the retailers. On the break of the circumstances, we'll be looking into the next plan of action. Okay? Hit the like button, guys. किसी को भी कोई भी doubt है at the current stage of scenarios, you guys can ask in gold. Okay, got it. Right? What is market following here, Nilesh? Inducement scenario S2 create हुआ था, bearish movement, right? Candle closure, third candle entry, and market is moving down, right? Next, let's come down to BTC. What a beautiful price action. कल हमने जो टारगेट मार्क किया था उसी टारगेट के साथ मूवमेंट जनरेट होके यहाँ पे बिल्ड आउट दी है. Sir, why no MC calculator for upside movement? There is a MC calculation over here, right? 0.375 का movement target is at 2981, right? 0.5 का 2995 जो कि hit हो चुकी है at the current range, and the 0.618 का target आके 3008 पे है. Even that is being marked at the current range, right? Both the numbers are marked. Clear नहीं है तो I'll just make it even brighter. Okay. Is it clear, guys? Next, we'll come down to BTC. In the sheet, the down move exponent raised by values in red background are not clearly visible. Okay. As you say, we'll work on that. Not an issue at all. Vasha, Excel में colors change कर दो. Bearish movement values का. Actually, it's clear, but even then, if you guys want it. Is this clear now, guys?
Now it's crystal clear. डेसिमल शॉर्ट कर दो वर्षा. Thank you so much, Varsha. Okay, guys, now it's clear. Coming down to BTC, what is BTC doing? Let's understand it from the scenario perspective of the daily movements. Okay, so where are the major buyers allocated? The major buyers are allocated at this point of action. With that plan of action, we had a mathematical number at 76,705. उधर से major reversal generate हुई है, right? How do we look into the allocations at the current perspective? POI range पूरा mark कर लो, demand कितना है उतना POI range में, right? Post the movement of demand range is allocated through the POI. What is the next plan of actions that we'll be working on? We will be allocating the same things through the inducement range. Right, ये हमारा inducement range था, post the inducement, the cover up and the movement completion. Right? उसके बाद what is the next major thing we'll be marking? The next major thing we'll be marking is the plan of actions of the internal liquidity, जो कि इस सिनेरियो में यहाँ पे है. Right? उसके साथ let's allocate the demand range. This is the entire demand what we had from internal liquidity point. With that, we had a scenario to build up with the scenario to movement closure and allocation. राइट एग्जैक्टली टारगेट हिट होने के बाद मैथमेटिकल नंबर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, उस रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में गई है. अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करता है, राइट, द हाई ऑफ द प्रीवियस डे विच इज currently at 84,324, the market will tend to cover up as much as the movement which you can see over here in the previous supply. राइट, ये सप्लाई पूरा कवर अप में आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे, विच इज टिल द पॉइंट ऑफ एक्शन 87,008. राइट, सो ये करंट प्लान ऑफ एक्शन है हमारा बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम. राइट, इन अ डेली टाइम फ्रेम लेट्स नॉट लुक इनटू एनीथिंग एल्स, कम डाउन सीधा to 4 hours. In 4 hours, let's allocate the math and the circumstances at the current ratio. So here the movement started from the point of action of this point. This was our first demand. Demand होने के बाद market ने क्या किया? Market created a movement. Right? With this moment of action, market completed, gave a break in a continuity. 50% से market ने rejection लिया, उसी rejection के साथ closure. Right? इस क्लोजर के साथ कितना रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने? मार्केट ने जितना प्रीवियस अलोकेशन यहाँ पे दिखाई है उतना ही अलोकेशन पॉइंट ऑफ स्पेक्ट्रम पे मूवमेंट ऊपर के लिए गया. राइट, इन दैट प्लान ऑफ एक्शन विच इज द कैंडल दैट वी विल बी टेकिंग अंडर द कंसिडरेशन, we will be taking under the consideration of this current green candle, जो कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में ये वाला है. राइट, एंड मार्केट ने कितना रिजेक्शन लिया यहाँ पे? उतना ही जितना कि हमारा प्रीवियस सप्लाई था. विक डजंट मैटर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, विक मैटर नहीं करेगी हमें इस पॉइंट ऑफ एक्शन में. राइट, so then post the movement action, what is the next thing that we'll be looking over here? The previous demand multiplied version is your next target. Hit हुआ, hit होने के बाद partner one inducement, partner two inducement, छोटा सा group, continuity. कंटिन्यूटी में कितना मूवमेंट आएगी? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड अलोकेशन है उतना ही प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगी. राइट, जैसे ही वो प्लान ऑफ एक्शन जनरेट हुआ, what is the next thing that we'll be looking for?
The next thing we'll be looking for a supply creation which was done at this point of action. उतना ही supply यहाँ पे हमको retracement के तौर पे दिखने को मिली. With that retracement, market took a rejection and continued towards the down. Right? अगर यहाँ पे 4 hours में अगर allocations देखोगे, it's a proper allocation of the movement till the wick creation. Right? So with this big creation point of view, what is the next thing that we'll be working on? We'll be working on towards the long point of action, right? First, we will allocate the long numbers of the BTC. Swing low, this is your swing high perspective. This is your retracement point perspective. So the numbers looks like for the bullish scenarios are 8225.28. Swing low perspectives are 76705.88. The retracement points are looking as clear as 79039.84. Right? What is the formulative number that we have got at the current stage? The formulative number that we have got is of 5519.4, which is golden ratio currently standing at 879 879700.22. Next, what is the ratio that we'll be looking for? The next ratio we'll be looking here for the intermediate, which is currently at 90,000. Excuse me, guys. 90,078.64. Right? Major levels mark हो गए 4 hours का. Remove the extension points of whatever you have allocated. उस allocation के साथ, what is the next plan of action that we'll be looking for? Let's come down to 1 hour. 1 hour में, what are the two major scenarios that will be working at the stage? Allocating the supplies. This is our first supply point of action 1 hour में जो create होते हुए दिखी थी. Right? So this is the first plan of action. With the first plan of action, we got a second closure movement, which is at this range post the retracement point. Right? With that, we identified a moment through the closures of an proper inducement scenario to S2 of the bearish movement. वहां से मार्केट नीचे गिरा. मूवमेंट कितना जनरेट हुआ? जितना हमारा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट था उतना ही जनरेट यहाँ पे दिखने को मिली. राइट, दिस वाज आवर प्रीवियस मूवमेंट. जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट यहाँ पे अलोकेशन, उसके साथ रिट्रेसमेंट कितना, जितना कि हमारा प्रीवियस सप्लाई में जितना डिमांड था उतना ही आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखने को मिली. कंटिन्यूटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मोमेंट. राइट, क्लोजर कंप्लीशन होने के बाद फिर से मार्केट ने एक छोटा सा ड्रॉप दिखाया था. कितना ड्रॉप दिखाया था? जितना कि हमारा इधर S2 का रेंज है उतना ही ड्रॉप ऑफ अलोकेशन आपको यहाँ पे दिखने को मिली थी. Right? So with this plan of action, market concluded with the same ratio point of view. Either let's allocate the bullish scenario of 1 hour. Right? Bullish scenario of 1 hour में swing high ये होगी, swing low will be the same point and the retracement point remains the same. Right? So what is the next plan of actions that will be working over here at the current scenario? The current scenario perspectives are swing high at the stage, which is looking at 80,550.98. Then the swing low perspectives are 76,632.92. Retracement points looks at 80,081.14. Right, what is the formulative number? 3,918.06. Golden ratio RK 86,000. 86,420.56.
intermediate ratio आके which is currently standing at 87,917.26. Right, overall numbers मिलने के बाद what is the next plan of action that we'll be working at? Our 4 hours golden ratio and 1 hour intermediate ratios are matching. So I'll be just keeping one line of conduct. Right, we'll remove the levels, post remove the levels. What are the next plan of actions that we'll be working on at the current stage? The next plan of actions will be working on the formulative numbers of the short trade जो कि हम कल के दिन में देखे थे. Same plan of action, swing high ये होगा, swing low ये वाला होगा, retracement point ये वाला होगी. At this range, what is the numbers that we are looking at? 84,335.38, swing low आके 82,727.84. What is the retracement point? Retracement point is 83,552.96. What are the numbers looking like? The numbers are looking like in the perspective of mathematical 2.0 is this, right? Post the movement completion, what is the next plan of actions that we'll be working over here? We'll be working over here for the target allocations for the next movement plan. इस plan of actions के हिसाब से what are the next targets that we'll be looking here? As हमारा टारगेट ये वाला हिट हो चुकी थी कल के दिन में, राइट, उसके साथ हमारा 2.0 भी हिट हो चुका था गोल्डन रेशियो के साथ, उसी के साथ मूवमेंट बिल्डअप में है. The next plan of actions is coming in 30 minutes and allocating the directions. How does the directions will be allocated at the current stage of action? One simple thing, don't compromise on the movement structures, right? Compromising on movement structures, always compromise on your plan of actions. The current stage हमारा supply ये है, उस supply के साथ closure completion of the first supply zone 30 minutes में आता है. 30 minutes में आने के बाद what is the plan of action that market has created? Each and every time जितना inducement range में हमारा creation retracement point का, उतना ही retracement यहाँ पे market movement दिखाता है and continuity, right? Each and every point of action retracement remains the same. Direction is bullish. At the current stage of the ride, what we are looking at, we will be looking at two plan of actions. Plan of action number 1, plan of action number 2, plan of action number 3. At this scenario, what are the numbers that we'll be marking out? It will be in the spectrum of the swing high, swing low, and the retracement point. The bullish scenario of 30 minutes currently looks like 81,483.58. Swing low point is at 80,122.01. Retracement point is at 80,818.33. What is the formulative number? 1361.57. Golden ratio आके 83,000. 83,021, intermediate ratio आके 83,541, right? And the movements will be looked into the spectrum of the same at the current scenario. 83,021.35. Then second plan of actions will be looked into the considerations of the same range, which will be over here at 83,541.47. Any doubts in BTC, guys? Follow the same rules, be in the directions of the market, don't execute the trades opposite to the markets.
Make sure trade fearlessly, following the risk management and being in the directions of the market. Trade emotionless, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. So wait, execute at the levels and be in the directions of the market. 15 minutes का ये हमारा supply है. First supply completion, marked out. Second supply, movement completed. Okay, guys. Any doubts? Please do ask. अगर 15 minutes का short trade allocation देखना है वो भी डाल देंगे, but which is not mandate at the current range of action. ये break होना है तभी जाके ये plan of action execute होगा. Okay, if this swing has to get into the play, it should break this level, then only. Okay, for the safer side I am giving you the numbers. Direction of the current is of bullish. Okay, market is in the eggshell movement. With the eggshell movement, the market is in the directions. Okay, eggshell movement में definitely यहाँ पे retailers positions create कर रहे हैं. hunting stage अभी तक create नहीं हुई है, market एक hunt करने दो. right, उस plan of action के साथ ही next हम देखने वाले हैं, उससे पहले नहीं. No guys, not at all. Wait कर लो. अरुंधति मैम, भांग का असर चैट पे मत दिखाना. अभी बोल रहा हूँ, पंचिंग देख रहा हूँ मैं आपका, कैसा कर रहे हो करके. वर्षा, अरुंधति मैम का स्क्रीनिंग पे किल स्विच दबाना. नशे में ट्रेड मत करो गाइस.
Excuse me, guys. Don't get confused. मैं 15 मिनट का ये levels डाल देता हूँ so that it will be easier for you guys. Okay, this is the 15 minutes level. Please follow this. Bearish scenario के लिए only one plan of action that you will be working. Break होना है यहाँ पे. इसके नीचे ही next plan of execution. इसके नीचे break होने के बाद ही तब तक market bullish ही है. वर्षा वर्षा श्रेया को contact करो. Right? Who is the buddy of Arundhati? Lineup में लो. Okay guys, कोई भी doubt है पूछिए. इसमें second supply complete हो गया है. The green candle high is not as per the mark black line. Which one? कौन सा टाइम फ्रेम पे बोल रहे हो समर्थ? 15 मिनट के टाइम फ्रेम से बोल रहे हो या कौन सा? Hit the like button. All the new members जो भी डाउट है पूछ सकते हो. अगर 15 मिनट के ये लाइन देके कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होना.
तो मैं समझाने के लिए डाला था उतना ही। 1 मल्टीप्लाइड वर्जन में 2, राइट। सेकेंड कंप्लीशन कंप्लीट हुई थी, उसके साथ मोमेंट ऑफ अलोकेशन यहाँ तक है। If you're noticing, this is the target. सर कुछ भी करते रहते हो। यस। वो 15 मिनट में कुछ लाइंस नहीं दिख रहा था ना, तो ड्रॉ कर दिया था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाने तक। कीप डूइंग द बैक टेस्टिंग गाइस। थोड़ा ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, पूछो ना नीलेश। आंसरेबल स्टेट में है तो डेफिनेटली आई विल गिव दिस आंसर, ओके। ओ भाई साहब, थोड़ा देर के लिए बाहर जाके आया था। थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, ट्रेडिंग के बारे में है तो पूछो।
Hashtag 1. There are always news like FIS, DIS, and hands are fighting with each other, and retailers are just collecting remaining scrap. Do they really work against each other? How true are the values like FIS sold this much, FIS selling, but DIS are holding the markets, vice versa? Does PCR actually work, or that is just for retailers? Let's come to your point of action. What is PCR? Before moving into FIS and DIS, right? The PCR is nothing but put call ratio. Okay. And the sentiment of the markets, what you're talking about, works doesn't matter on this because FIS doesn't look in options, doesn't look in options, right? Why does the chart indices moves up? Because their positioning in the companies will be looked into the circumstances, right? In that scenario, what is the first thing you have to look? P ratio of the company which they are investing in, right? Post looking into the fundamentals of where the market is getting into the play, that's when the major action come into the play. And how is it looked at the scenario? समझना, a XYZ company and ABC company, there are two companies which I'll be calling. This has FII, this has DII. Okay. So in this scenario, let's understand one thing. दोनों एक ही चीज फॉलो करते हैं, नंबर्स. ओके. अगर डीआई को पता चला कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आया है, तो डेफिनेटली ही विल सेल ऑल द शॉर्ट पोजीशंस. Same cheese with FI. He knows that here we are getting a pressure of buying. Definitely he will sell. It's not in the position of opposite directions. Right? Definitely थोड़े थोड़े कंपनी में opposite version में create होती है. No doubt, right? If FIIs are looking into the position of allotting the trades in the direction of the bearish markets, right? There are few companies where they will be investing in. DIIs will be looking for investment in some of the companies where it is a part of Nifty 50, right? Or large cap or mid cap. So in these positions, the buyings and sellings happen in different perspectives, right? यहाँ पे आपको जो दिखाया जाता है ना कि FIIs ने इतना बेचा है, DIIs ने इतना खरीदा है, right? That is just to create the sentiment of the market. Market sentiment कैसे create होता है? Okay, market sentiments are create to scare the retailers. Okay, so how do they scare the retailers at the current thing, right? So जब भी आपको डराना चाहिए तो फर्स्ट वो करेंगे the number of allocations दिखाएंगे, right? अगर ये buy कर रहे हैं, that will not be even in the position of DIIs, right? अगर DIIs buy कर रहे हैं, that will not be in the position of FIIs, right? अगर ये एग्जाम्पल में खरीद रहे रिलायंस के स्टॉक, सॉरी बेच रहे रिलायंस के स्टॉक, ये खरीद रहे होंगे आईटीसी का स्टॉक, right? Is there a similarity in this and this? No, right? With the same pattern, अगर FII खरीद रहा है यहाँ पे जाके MRF, right? एंड उसके साथ यहाँ पे DII बेच रहा है HDFC, आर देयर अ साइमल्टेनियस वे ऑफ लुकिंग इनटू इट? नो. यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाया जाता है? भाई साहब 30,000 करोड़ के FIIs ने बेचा है आज, DIIs ने परचेस किया है 5,000 करोड़ के, जो कि ना इसके साथ ना इसके साथ
कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये नंबर्स देख के पैनिक क्रिएट होती है मार्केट में। ओके, सो व्हेन द पैनिक क्रिएट्स, there is a fear indicator in the market always, right? Interpretation identify किया जाता है, correct? To that, the next plan of action gets created. If the PCR is above 1, okay, then it's a bearish sentiment. Okay, if the PCR is lesser than 1, it's a bullish sentiment. But यहाँ पे क्या देखना है आपको मेजरली, राइट? यहाँ पे सब लोग जो देखते हैं ना ये सेंटिमेंट रेशियो, यहाँ पे देखते हैं FIS DIS PCR is equal to 1. Okay, this is for neutral sentiment. अगर मार्केट न्यूट्रल आ गया, DII भी हो सकता है, FII भी हो सकता है, मार्केट ऊपर नीचे कर देंगे। न्यूट्रल देखना पसंद नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे लिमिटेशन आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ पैनिक, राइट? एक सिनेरियो में समझो FIS ने पैनिक क्रिएट किया, न्यूट्रल सिचुएशन था, उस न्यूट्रल सिचुएशन से, न्यूट्रल सेंटिमेंट से मार्केट में FIS ने बेरिश सेंटिमेंट दिखाया, राइट? जब बेरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है, क्या आपको बीच बीच में पता चलता रहता है क्या कि DIS ने इतना खरीदा है? नहीं ना, वो आपको पता चलेगा एंड ऑफ द मार्केट क्लोजर ओनली, नो DIS बॉट दिस मच. Why does the market move at the ending and starting only? Because of the bulk orders? नहीं, not because of the bulk orders. Bulk orders is placed by DIS, right? Suppose DIS is placed in bulk order, उसी point of action में you will identify the next moment of action is LIO. कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको LIO. Okay, when the LIO is placed, that's when the major movement is happens, right? बल्क ऑर्डर्स क्यों प्लेस होता है? बल्क ऑर्डर्स का मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑफ 1 करोड़, एंड यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा है ऑफ 5,000 crores, 3,000 crores, 10,000 crores. Will that be placed through bulk orders? No, it will be placed through the LIO orders. Okay, with the LIO orders, the market tends to hunt the liquidity of all the retailers and bulk orders. Okay, once the LIO hits the retailers and the bulk orders, that's when the major sentiment plays and the direction catches in the market. Limit iceberg orders. L stand for limit iceberg orders. Right? This is just not a normal iceberg order जो आप लोग जीरोधा में देखते हो ना, धन में देखते हो ना.
वो आइसबर्ग नहीं है. The limit is not the limit what you see in the market. The limit is of unlimited large volumes. Okay. शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहते हो तो इसे आप कह सकते हो कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स प्लेस्ड. उसका डेटा दिखा दो मेरे को खोल के कहीं पे भी. राइट. जब ये क्रिएट होता है ना, एलआईओ जब क्रिएट होता है तब डार्क पुल क्रिएट होती है. जब डार्क पूल क्रिएट होता है तब रिटेलर्स को बुलावा देता है. जैसे ही बुलावा दिया, मार्केट में उन लोगों को सबको बिठाता है. जितना एलआईओ ऑर्डर क्रिएट हुआ है उतना लिक्विडिटी ग्रैब करता है, डायरेक्शन में मूव करती है. कैन वी सी एफआई डीआईएस ऑर्डर्स इन वॉल्यूम्स? नो. एलआईओ ऑर्डर्स इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल फॉर्म ऑफ एक्शन जहां पे रिटेलर्स के साथ वो पंचिन होती है. राइट. ये जो आपको बोलते हैं ना, हेलो. या. हाँ, नो वरीज. भेज दीजिए. नहीं नहीं. आई एम वेटिंग फॉर इट. दैट्स टोटली फाइन. भेज दीजिए आप. प्रॉब्लम नहीं. ओके. सो व्हाट डज द मार्केट टेंड टू डू एट करंट पॉइंट ऑफ एक्शन? समर, आप जो पूछ रहे हो ना, एफ आई एस डी आई एस ऑर्डर्स इन वॉल्यूम्स, राइट. ऐसा कोई भी टूल नहीं है या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप एलआई ट्रेड कर सकते हो. राइट. ये आपको जो नया नया सेबी रूल्स दिखता है ना, गुड, दैट इज ओनली फॉर रिटेलर्स. आपको जो ब्लॉक डील्स दिखते हैं ना, राइट, व्हाट इज अ ब्लॉक डील? द ऑर्डर्स विच इज प्लेस्ड फ्रॉम मॉर्निंग 8:45 से लेके 9 o'clock तक जो प्लेस होती है, एंड बाद में 2:05 से लेके 2:20 तक प्लेस होती है. व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाई? दिस इज द रियल गेम. राइट. सो ये आपको पता भी नहीं चलेगा किस पॉइंट ऑफ एक्शन में प्लेस होगा. वॉल्यूम्स इतने छोटे छोटे होंगे ना कि you will not be even able to identify what happened. अचानक से एक पंप आएगा. So do you think this and all will be helped out in the circumstances of through the charts, right? Allocating through the indicators and all? No. Math use करते हैं यहाँ पे. That has a different formula all put together. That formula works into the market.
Happy Holi, Mr. Aviral Jain. Hit the like button, guys. How are you? Long time. Good morning, Bishop. Sir, gold running with 80 pips. Okay. Just over with mid sims. Great, great, Aviral. Okay. Because of bulk orders, what is the full form of LIO? हो गया. Okay, हो गया. Can we see FI, DIS, order and volumes? हो गया. Never heard this concept before. नीलेश कोई भी कॉन्सेप्ट पहले सुना था. That was the old message, now at 100 pips. Okay. ये थोड़ा खतरनाक नहीं हो? कैसा गया एग्जाम, अविरल? How did your exam go? Sir, exams went good. Great, great. Keep it up, my boy. Do the back testing, do the forward testing. True, sir. Everything you have thought is a new to retailers. Forward test करो. जो ट्रेड में है MTSL फॉलो करके चलो. जो नया ट्रेड ऑफ प्लान ऑफ एक्शंस देख रहे हैं, वेट कर लो. BTC में जो रिटेलर्स, सॉरी, जो लॉन्ग के तरफ बैठे हैं, पोस्ट स्क्रीनिंग फॉलो करो द रूल. करेंटली लंदन सेशन, एग्जीक्यूशन एशियन सेशन में हुआ था. तो ट्रेड ऑफ एक्शन विल बी फॉलोड थ्रू द MTSL पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 20 पिप्स. जो लंदन सेशन में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उनका प्लान ऑफ एक्शन इज ऑफ 40 पिप्स.
Okay, hit the like button. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो. So you say that you won't get any data of FIS and DIS. एक जगह दिखा दो जहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स जो दिखाते हैं वो नंबर्स छोड़ के इन डिटेल्ड में कहीं पे बताया हो. सर BTC ट्रेड इज रनिंग ग्रेट. नीचे जो नंबर्स है वो नंबर्स ही फॉलो करना शॉर्ट के तरफ, इसके ब्रेक के बाद ही, उससे पहले नहीं. सर BTC ट्रेड इज रनिंग. हाँ, कल से ही चल रहा है हमारा ट्रेड. जो TG में ग्रुप में आया था ना, रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन, शॉर्ट होने के बाद लॉन्ग पे बैठे थे. वो वाला ट्रेड चल रहा है. इधर एक्सेल चल रही है. एक्सेल मूवमेंट होने के बाद नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा हमारा. ओके. गोल्ड में शॉर्ट का चल रहा है. एग्जीक्यूशन पॉइंट वाज एट 2992. How to join the group? If you're trading through an Exness, we do have one group for Exness. Right? Please share the screenshot of the trades executed through our links. उस link के साथ you will be verified and bot will add you into the group. Sir, why don't you promote? ये एक ही रह गया था अभी. तो सिर्फ आपका कल का ट्रेड क्या हुआ? How did your yesterday's short trade go? BTC में. सर गोल्ड का ट्रेड एक्सप्लेन करना प्लीज. मार्केट मूवमेंट ऊपर के लिए बिल्ड हुई थी. 30 मिनट्स प्लान ऑफ एक्शन के साथ हमारे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे था. राइट. पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, अ ग्रुप ब्रेक. ब्रेक होने के बाद कैंडल के अंदर सस्टेन फॉलोड थ्रू टुवर्ड्स द डाउन. 15 मिनट में जो अलोकेशन थी थ्रू द S2 ऑफ बेरिश सिनेरियो 2, मार्केट क्लोजर दिया था. मार्केट क्लोज करने के बाद उसके अंदर ही क्लोज हुई. थर्ड कैंडल में कंटिन्यूटी में जब आता है ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करके अभी चल रही है. आई हैव आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद डेल्टा एंड एक्सनेस. व्हाट्सएप में मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना. यू विल गेट हाउ टू गेट द मैपिंग चेंज्ड. S2, दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. अविरल, आप मिड टर्म एग्जाम्स चल रहा था ना, तो उस समय पे वो रिलीज हुई. वीडियो संडे को आ रहा है. You will have a clear cut example and understanding of the markets. Right, with the understanding of markets you will get to know how exactly the market moves from the point of action. Okay.
We do have live example trades which we have taken in the live sessions that has also been mapped into that. So you will have the clear understanding of how the market works. Okay. What could be plan of action for me now? शॉर्ट का ट्रेड है. ऊपर नंबर है देखो, एक्सपोनेंट रेज हुआ हुआ नंबर है देखो, वहां तक का मूवमेंट है. ओके. एंड सर काफी वीडियोस अपलोड करे हैं आपने इस सीक्वेंस टाइमलाइन वाइज. यस. उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेना. उसके साथ होम टैब में जाओगे. मेजरली यू हैव टू गो थ्रू 3 वेरिएंट्स विच इज लिक्विडिटी सेक्शन, राइट. उसके बाद वॉल्यूम, लिक्विडिटी वॉल्यूम एक ही है. मैथमेटिकल सेक्शन, सप्लाई एंड डिमांड सेक्शन, 3 सेक्शन देख लेना काफी है. ओके सर, TP1 तो हिट है. एक्स, हाँ, हिट हो चुकी है. नाउ कंटिन्यूटी. Sir, now the wick is not created for 1 hour. Candle also market is in the inducement. What the plan of action here? You trade in 15 minutes. So why are you looking for 1 hour at first place? And there is no inducement in the plan of action of gold at the current stage. प्लान ऑफ एक्शन ऑफ इंड्यूसमेंट 2994 पे क्रिएट हो चुकी थी. वहां से मूवमेंट शुरू हो चुका था. आप ट्रेड में थे, आप डर के ट्रेड से निकले हो. सो दैट इज योर फॉल्ट. So second plan of action over here, what you can currently look at is on the break, second candle closure, third candle wick creation के साथ re-execution देख सकते हो till the target. रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट से शॉर्ट. यस. अगर आप नोटिस करोगे, ये प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी 80% कंप्लीट हो चुकी है. सो बी वेरी केयरफुल गाइस. कैसे कंप्लीट हुई है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. This is our major demand of the POI range of 15 minutes. With this plan of action, we do have a movement which got allocated at this point. Post that, the market has completed the movement and where exactly it is trading. So break होने दो, उसके बाद ही next plan of action.
Yes, that is better to avoid. जो जो टॉप से बैठे हैं सिर्फ उनके लिए. एक्शल हंटिंग हो रही है, होने दो. 1:10 रेशियो का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है, लेने दो. उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट नेक्स्ट जनरेट करेगा. देन यू गाइस कैन लुक इनटू द नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रेड अलोकेशन. क्या मार्किंग है वो? हॉरिजॉन्टल रे क्या मार्किंग है वो? दो दो हॉरिजॉन्टल रे क्यों है वो पूछ रहा हूं मैं, तुम मेरे को सप्लाई एक्सप्लेन कर रहे हो. स्क्रीनिंग में वो मैपिंग दिख रहा है तुम्हें? जब स्क्रीनिंग में वो मैपिंग नहीं देख रहा है तो व्हाई आर यू एडिंग समथिंग एडिशनल टू इट? दैट्स हाउ यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड. अगर मार्केट ब्रेक होगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन दैट विल बी लुकिंग एट? द करंट प्रीवियस डिमांड, ये डिमांड को अलोकेट कर सकते हो. ओनली कंडीशन इज इट शुड ब्रेक, द थर्ड कैंडल शुड कंटिन्यू. That's when you can add this point of action here. Okay, not prior to that. All the new members जो भी डाउट है पूछ सकते हो. नितेश, प्रीवियस सप्लाई के हिसाब से बीटीसी ने रिजेक्शन ले रहा है, इक्वलाइज क्रिएट किया है. इज इट अ बेटर ऑप्शन टू लुक फॉर इट? नो मैम, नॉट येट. 15 मिनट्स का कंटिन्यूटी में ब्रेक करने दो, इंड्यूसमेंट रेंज को ब्रेक करने दो. वी हैव वन पार्टनर, टू पार्टनर, थ्री पार्टनर. थ्री पार्टनर के साथ मार्केट ने ऊपर के लिए ब्रेक किया, उसके अंदर कैंडल क्लोजिंग दिया है उसके साथ ही, राइट? Notice over here, what is the plan of action that you have? Partner 1, partner 2, partner 3, break. Inside the candle, the market has sustained and coming down. The next plan of action will be let the market go up and then continue. That's when we'll look for it, not prior to that. Okay? इतना जल्दी एक्सेल हंट नहीं करेगा मैम, बहुत जल्दी हो गया है. This is the starting of London session. What is the point ratio? 2000 पॉइंट्स के ऊपर है, वेल एंड गुड. नहीं है.
रिस्क लेके अगर करना है तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके नीचे आने दो, तब एग्जीक्यूशन देखना, नॉट प्रायर टू दैट। S1 सिनेरियो 3 फॉलो कर रही है, ऑन द कंटिन्यूटी में ही देखना। सुधीर जी, हैप्पी होली, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? गलत सप्लाई मार्किंग है। कहाँ से लिया सप्लाई? 50% पे लाइन अप मार्क करना फर्स्ट। कंटिन्यूटी में ब्रेक हुआ है तो 50% लाइन अप मार्क कर। सर, इज दिस इंडिकेटर शोइंग ऑन द स्क्रीन? नहीं नहीं सुधीर जी, इंडिकेटर नहीं है वो। In case of gold, 15 minutes here, S2 is formed and it has created a demand, then there is retracement. So if it breaks, then we do calculate the target based on mathematical concept too. Yes, we can do that. That should be only with the break and sustainability, right? When you can allocate it, once the market closes at this range, candle closure, continuity, you can mark the swing high, swing low and retracement point. Automatically number यहाँ पे आ जाएगा. Don't worry. Okay? The scenario is simple. Let the market break. Right? Market break होगा तो ये जो demand है ये भी allocation होगी. Okay? So this will be the point of action of allocation what we'll be looking at. Okay, got it.
इज इट करेक्ट? किस चीज के लिए पूछ रहे हो? कहाँ से लिया वो डिमांड? यस, राइट। सर, माय वॉइस इज टू लो। सर, वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए सर। Check, 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 check. Hello, hello. Hope the volume is increased now. It's at the top. Yes, sir. Let me check. Hello. How is the volume now, sir? Sudhir ji, is it clear? Is Exness legal in India? If you're looking in perspectives of a business attorney, yes, it is legal in India. If you're looking in the perspective of allocating the funds through the bank accounts, it's not, right? Clear but low, sir. Is anyone else facing the same issues of volume? Loud and clear, sir. All the new members, जो भी doubt है, please do ask. Right? Do the back testing, do the forward testing. Forward testing में जो doubts आएगा, note down कीजिए, live पे पूछिए. ट्रेड्स allocate करने के लिए Alt A दबाइए, alert place कीजिए, alert break होते ही you can come back onto the screen, you can look into the work of execution. तब तक के लिए do the back testing, do the forward testing and do the live testing. जिन जिन का back testing, forward testing हो गया है, live testing कीजिए.
जिन जिनका नहीं हुआ है, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। P2P perspective, yes, through the P2P perspective only I was talking. एक्सनेस में BTC ट्रेड करो, लेवरेज मिल रहा है आप लोगों को अच्छा खासा, राइट? डेल्टा से 5 गुना। Indians, this is for Indians. People abroad can trade any platforms of Forex as well as commodities as well as cryptos. Okay? एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे सकते हो जो लोग फोरेक्स में नहीं ट्रेड करना चाहते हो। एक्सनेस में वी डू हैव ऑप्शंस ऑफ फोरेक्स इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन कंपनीज। एंड फंड्स उतना ही रिमूव करना जितना आप मंथली बेसिस में आपके अकाउंट में निकालते हो उस हिसाब से, राइट? इफ योर अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड ऑफ 400 टाइम्स लेवरेज में लिक्विडिटी हिट हो जाएगी ना? 400 टाइम्स? नो सर, 400 टाइम्स कहाँ पे है ये एक्सनेस में? 1:400 है। लिक्विडिटी हैंड क्यों हो रहा है? दूसरे लोग भी तो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली लिक्विडिटी हैंड करेगा। If you're sitting in running candles, if you're trading in FOMO, definitely the market will hunt you down. Say me one thing, you have executed the trade at 29.92 यहाँ पे, you have kept 40 points of SL. Is the movement where it is? It has not even crossed 10 pips in negative, right? Major to major, it can cross up to 20, not more than that. The risk to reward should be followed majorly. If you guys are following risk to reward, yes, definitely it will help you out. पोजीशन साइजिंग पे काम करके ट्रेड एग्जीक्यूट करो, एवरीथिंग विल बी इन गुड थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट BTC, उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ओके सर, मेरे को ये बात बताइए, कल का प्लान ऑफ एक्शन, 2 ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। शॉर्ट की तरफ scenario 2, major of the people sat over here, we had executed over here, we had executed over here. What is the risk to reward? Let's look into the perspective. कोई भी कैंडल में आप बैठे हो, आपका SL range is at 300 points. Okay, so your evening session न्यूयॉर्क में हमने रखे थे 400 points, right? 400 points में क्या वो 100 points भी कवर अप हुआ है? नहीं हुआ है। डायरेक्शंस में होना इंपॉर्टेंट है, right? Let's look into the perspective of second allocation point, right? S2 confirmation यहाँ पे हुई थी, इस point of action से इस point of action 500 points. Did the market move? Execution आपका यहाँ पे भी नहीं होगा।
right? In the current scenario of the long, आपका execution point कहाँ पे था? यहाँ पे. What is the moment range that we have got? The moment range we have got is 300 points. 300 points नीचे आया भी नहीं. BBTC in continue. 1 मिनट है, रुक जाओ विरल, क्लोज हो जाने दे. Low capital, let the market give you the second confirmation with that only. Okay. Following the rules matters. FOMO में यहाँ वहाँ trade execute करोगे तो you won't be able. एक मैसेज आया है दाक्षी से. Good morning, sir. I am watching your stream from last 2 weeks. I have executed the trades as per the mathematical numbers, and I have allocated the movements through the supply and demand and following the levels as per the live streaming. I am from Texas. I have taken 12 trades so far, started with $500. Currently, my account sizing is at 100K. Thank you so much for helping me out, growing my account as well as learning perspectives. Thank you. Thank you, Dakshi. Keep learning, keep growing.
हिट द लाइक बटन गाइस। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। पूरे कीप इट अप दाक्षी। सर मेरा जवाब का रिप्लाई नहीं आया। बीटीसी इन कंटिन्यूटी। दो दो लोग सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? लाइव में अविरल भी सेम क्वेश्चन पूछे। उसमें सिर्फ दो बी है। बीबीटीसी। रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा हो? क्योंकि मार्केट में क्लियर कट बोला ब्रेक होने दो। ब्रेक होगा तभी ही। रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी क्लोजर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक। ब्रेक होगा एग्जीक्यूट करना, नहीं ब्रेक होगा मत करना। मेरे हिसाब से करंट 15 मिनट्स कैंडल ग्रीन बना रहा होगा। सर व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम्स? ये सेकेंड टाइम पूछ रहे हो आप। फ्री टाइम्स बहुत रेयर मिलता है, बट फिर से बता देता हूँ। ऑल द रैंडम शिट्स। जो जो इम्पॉसिबल चीजें लगता है वो सब करने का मजा बहुत आता है। You said book reading and all. Book reading, meditation and all is on a daily basis. You asked about free time. फ्री टाइम कब मिलता है? जब यू हैव मोर देन 8 hours. दैट इज अ फ्री टाइम। मंडे टू फ्राइडे तक मिलता नहीं है फ्री टाइम। सैटरडे बिजनेस क्लाइंट मीटिंग्स रहती है, तो सैटरडे भी भूल जाओ। संडे कभी कभी लंच डिनर्स होता है, राइट, विद द इन्वेस्टर्स एंड ऑल कंपनीज। सो मंथ में 2 बार मिलता है फ्री टाइम। उस दो टाइम पे आई स्विच ऑफ माई फोन, आई गो वेर एवर आई वॉन्ट, एंजॉय, do whatever things that I haven't done in my life and enjoy it. दो ही चीज है। सर मीटअप का कोई प्लान है? सर मीटअप के लिए मेरे को 4 घंटा से 5 घंटा निकालना पड़ेगा, राइट? कैलेंडर इज शेड्यूल्ड till September 29th. 1 million सब्सक्राइबर्स होते तो देखेंगे।
थैंक यू सर। ट्रेड ले लेने वाला था बट रिवाइंड करके देख रहा था, आपने बोला था कि ब्लैक लाइन के नीचे, तो ब्लैक लाइन मैंने डाला नहीं था, तो मार्केट उसी पॉइंट से ऊपर आ गया। नो वरीज। फ्राइडे है ना, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 200 पिप्स गाइस गोल्ड में, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वी गॉट 600 पिप्स। सेकेंड वीक ऑफ द मंथ है, सो अगर वो चाहिए ना, उतना बड़ा मूव चाहिए, एटलीस्ट 300 पिप्स कंटिन्यूटी में, राइट। कल मार्केट ने फिर से 450 पिप्स दिया, राइट। 450 पिप्स प्लस आज के दिन तक वो ट्रेड जो चल रहा है, वो करेंटली इज रनिंग विद 630 पिप्स, ओके। विद दैट प्लान ऑफ एक्शन, अगर कंटिन्यूटी में वर्चुअलिटी देख रहे हो ना, उसके लिए एक बड़ा सा ट्रैप चाहिए। व्हाट ट्रैप? रिटेलर्स ट्रैप। The retailer's trap should be at least of 200 pips. अप एंड डाउन दोनों मिला के बोल रहा हूँ। 100 pips towards the short, 100 pips towards the long. अगर ये ट्रैप हमें मिलता है आज के दिन में, तो डेफिनेटली कंटिन्यूटी में 300 पिप्स और मिलेगा हमें। अगर सिर्फ 100 पिप्स का ट्रैप मिलता है, then we could get 200 pips का मूवमेंट, ओके। Everyone hit the like button guys. सर मीटअप का कोई प्लान है? आप लोकेशन बताओ, जैसे ही वो 1 मिलियन हिट होगा, they will definitely plan at your location only. आप जहाँ पे बताओगे वहां पे। with a proper party thrown over. क्रूज में चाहिए। मैं 5 घंटे की बात कर रहा हूँ, 5 दिन की नहीं। Any state could do for me because 1 hour is the shepherd time. So 1 hour, any state you guys can pick. In that, any place of meetup you can pick, not an issue. Mumbai is fine. I'm talking about location, Samar. You want to do the meeting at Taj, meetup at Taj, you want to do it at Baston's, you want to do it at Corlos, you want to do it at Camatiles, कहाँ पे करना है वो बताओ। पूरा पार्टी हमारे तरफ से हो मीटअप। Only one condition, 1 million subscribers. So you party a lot. Oh yes, ma'am, I do.
Who wants to go in cruise? Anjali. प्लान करेंगे यार, क्रूज भी करेंगे, बट आफ्टर सितंबर। रॉयल कैरिबियन करेंगे, नहीं तो डिज्नी करेंगे। Because September November month is always like markets play in a POI range, वो क्रूज से ही कवर अप कर लेंगे हम लोग। We'll do the meetup in Maratha. नहीं, I'm not even ITC Maratha. ITC Maratha में you won't get that facility of dancing. पीने के बाद आप लोगों को नाचना होगा ना। अगर जस्ट डिनर या लंच मीटअप होगा तो मराठा इज फैंटास्टिक प्लेस, वी कैन डू मराठा। यस, गुड ऑप्शन। ऑल द न्यू मेंबर्स, जो भी डाउट है पूछो। एंड हाउ इज द बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग गोइंग ऑन? नोट्स बनाओ, नोट्स बना के डू लेट अस नो। कहाँ पे यू गाइस आर गेटिंग स्टक? I will do the meetup in Maratha. Maratha में basically we should do the meetup in the Kabban Pavilion, or else we'll do the meetup in Kebab and Curries. Same is that which you don't know. आप पूछो जो पता नहीं है, मैं बोलूंगा पता नहीं। जिनको भी एक छोटा सा रिस्क लेना है गोल्ड में, मार्केट एक रेंज में ही है, राइट? लॉन्ग की तरफ एक कैंडल क्लोजर होने के बाद नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूटी में देख सकते हो। जिनका भी कमेंट आया था उनको भी मिला के ये बोल रहा हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? रॉन्ग क्वेश्चन आस्क्ड। हाउ यंग एम आई? 16 years. Fun talks, huh? So much of fun talks today.
अगस्त्य स्मिता मैम को देखो यार, सही से पैर खींच रहे हैं आज मान बैठ के यहाँ पे। उनको एक गोल्ड में ट्रेड दिला दो, शांत हो जाएंगे। ओके सर। मिस्टर अविरल, स्टार्ट द बैक टेस्टिंग, डू द फॉरवर्ड टेस्टिंग। ओके, अलर्ट लगा के करते रहना, जो भी डाउट आया पूछना, बिकॉज यू हैड ए गैप ऑफ मोर देन अ नाइस 3 weeks। आप लॉन्ग में हो क्या? नहीं, मैं लॉन्ग में नहीं। बीटीसी लॉन्ग चल रहा है, गोल्ड शॉर्ट चल रहा है। एमटीएसएल पॉइंट हिट नहीं हुआ है तो एग्जिट क्यों करूँ? स्विंग ट्रेडिंग में गोल्ड लॉन्ग है। Sir, the craziest part is subscribers 838, viewers 8, like 8. Nice. सच में यार। सो अगर वो 3 को भी बाजू से हल्का सा व्हाइट पेंट लेके कवर अप कर देंगे ना, तो वो भी 8 हो जाए। सो 888, viewers 8, like 8, एंड ओवरऑल व्यूज भी 88 है। ब्रेक होने दो गाइस, होने के बाद देखना, उससे पहले नहीं। सर, कैन यू वर्क ऑन द पाई चार्ट? क्या क्या कराते हो आप लोग? कब लॉन्च हुआ है कॉइन? वंश के पास भी था ना एक कॉइन? भाई साहब। सर, आपके पास भी है। मैंने तो माइन नहीं किया था, मैंने 10-10 रुपए में खरीदा था। हाँ सर, ये उसके पास अराउंड 160 है। नहीं, उसके पास 210 है। वो भी पता है आपको? यस। सर, आप भी खतरनाक हो।
सर आप भी खतरनाक हो। पै के डंप के बाद भी 15x चल रहा है आपका। हाँ, actually what happened was I had got a group of people who had Picoin, okay? So crazy story है वो, right? उनके college students थे, so they wanted money, pocket money to party. So we had met in one of the parties. So he said, यार Picoin है, मेरे पास इतना coin है, migrate भी हो चुका है, but इसका क्या value? ये तो scam लग रहा है। जैसे वो scam बोला ना, अगर कोई भी बायर 10 रुपए में मिलता है मैं खरीद लूंगा, दे दूंगा उसे। So immediately hard cash 10 रुपए पे I got all of his friends coins. So overall उनका जो बैग था ना, so there were 10 friends जो साथ के मिलके कर रहे थे। हर एक बंदे के पास 300 कॉइन्स थे, राइट। एक शॉट में मेरे पास 3000 कॉइन आया एट अ प्राइस ऑफ 30,000। That's the funniest part. And that too I bought it because I was not in the state कि like okay छोड़ो यार, उनको पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए, देते हैं। एंड उस समय पे माइनेट लॉन्च भी नहीं हुआ था। 4,60,000 चल रहा है एट द करेंट स्टेट। सर डू ट्रेड इन मीम कॉइन्स? नहीं। इफ आई एम ड्रंक, यस। देयर इज अ सिनेरियो, इफ आई एम ड्रंक ओनली, नॉट प्रायर टू दैट। What could be your lot size? Not more than $300. Do you do gambling? No. I hate gambling. What are you currently doing? This is analysis, right? We work into the quantum mechanics of trade executions through math. अगर इसे कोई gambling बोल देगा, I can debate with him for more than continuous 30 days. फाइनली पाई कॉइन ऊपर आया। पाई कॉइन का भी स्टोरी अच्छा है मेरे पास। ये भी एक पार्टी में खरीदा था। Buying price was 0.00000, एक सेकंड चेक करने दो। 55 पे बाइंग थी मेरी। अभी भी नेगेटिव में है, बट आ जाएगा ग्रीन में। दैट्स ऑल। मीम कॉइन्स में ये दो ही चीज जो थी। अगर पाई नेटवर्क एक चीज समझ लेना, बाइनेंस लॉन्च कर लिया ना, डायरेक्टली पाई नेटवर्क विल स्पाइक एटलीस्ट टिल $35 to $40। मैं स्पाइक बोल रहा हूँ।
and you say you don't trade meme coins. मैंने मैंने क्या बोला? I don't trade meme coins. Yes, the current state what I am in, I don't trade. I'm saying, only when I party I trade meme coins, not prior to. Excuse me. आपको ऐसे लोग कहाँ पे मिलते हैं? Go to the best of the best pubs, you will find them. सर ये जो अभी ड्रॉ कर रहे हो कब सिखाओगे? जब तू 99% मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कंप्लीट कर दोगे, नो डाउट तब सिखाएंगे. सर ऐसे ड्राइंग कर रहे हो जैसे चार्ट आपके बात मान के चलता है. अब चलता है तो चलता है, मैं क्या करूं. Sorry, I was busy with some work. One of my friend referred me Pi Network. I now have 378 coins. Have to mine it and wait for listing in Binance, is it? Yes. If the Binance listing happens, the price could pump. If not, the market could come down till the range of $5 max.
You have 378 coins. 378 coins. Nice. Great. So basically, your value has been doubled at the current stage because you are mined it, you are not paid it. What are you doing at the current state? I'm doing back testing because markets are not moving in our directions. जोन में है, BTC लॉन्ग की तरफ जा रहा है, हमारा डायरेक्शन टारगेट हिट करना है. गोल्ड एक ही जोन में है, सो नॉट इंटरेस्टेड. So even you do back testing. Yes. जो मैं करता नहीं हूँ आपको बता के मेरे को क्या फायदा बोलो. And you're doing only daily because I'm a swing trader. इंट्राडे करने के लिए मेरे को एक बार डाल दिया तो हो गया, लेवल्स पता रहता. But swing trading is something that I still have to practice a lot. कभी कभी numbers भूल जाता. 63 था राइट हमारा टारगेट. Yes, 63.80. Come on. अभी 7 पॉइंट्स चाहिए. अच्छा मौके. वर्षा, डेस्क 1 पे कौन बैठा है? 25% ऑन रेज डंप करना है बोलना. ठीक है. ऑन रेज. ब्यूटीफुल गाइस, गोल्ड ने ब्रेक करने की कोशिश में है. कोशिश करने दो. ब्रेक हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर से MTSL को वही पोजीशन में रखना, ग्रीन कैंडल की विक के हाई के ऊपर.
ऑल द न्यू मेंबर्स, जिसको भी जो भी डाउट है पूछिए. ऑन द रेस 25%. वो पूछ रहा है कहाँ पे. मैसेज कर दिया मैं डेस्क पर. जो 1 को भेजना था वो 12 पे भेज दिया. वो नंबर देके कर देना. शालिनी से बात करा देना मेरे को आज. Done with back testing, guys. Oof, 15 minutes. We'll be in the stream for next 30 minutes. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. Thanks. No worries. Hit the like button. एक चीज याद रखना सभी लोग. Trade fearlessly through the price actions, following the risk management with emotionless trading. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Carry the poker face and allocate the direction trades through the mathematical concepts and sit patiently till the target hits. In the directions of that, allocate the supply and demand with the supply and demand. Look for a proper prior liquidities of inducement. With the inducement, allocate the add-on points till the targets. ये किसका स्क्रीन है? ना मूव हो रहा है ना कुछ है, सिर्फ नाम के लिए ट्रेडिंग व्यू में डाल के रख दिया है. वर्षा वो स्क्रीन एंड करो. Nilesh, how is your back testing, forward testing going on? Good, sir. How many charts done so far? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, you're learning about the markets, do hit the like, share and subscribe. GBP done now, working on gold. कितना कितने महीने बैक टेस्ट किया था नीलेश GBP पे? Almost 6 months. Okay.
So GBP 6 months डेटा काफी है क्या? Nilesh, GBP do it till November 28th, 23 तक करना, okay? Because you have done all the directions, but you have not done the POI range in the market. So add till November 28th, 2023. वहां तक बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी वहां से शुरू करना. And जितना complete हुआ है, well and good, because that is all directions, right? But majorly POI ranges में, how do you look into the circumstances, right? Get into that shape as well. November 28th. Gold also do it for 1.5 years. Huh? अगर गोल्ड ने आज तुम्हारी बात मान ली ना सर, सच में आपके मुंह में दही शक्कर. ओके, ओके सर, विल डू इट फ्रॉम 28 नवंबर 23rd. जितना कंप्लीट किया है वो खत्म कर दो, बट 28 नवंबर से स्टार्ट करना. वी डू हैव पीओआई रेंज इन दैट जोन उसके लिए. So you're saying BTC will move 82 845 800 points more. मैं नहीं बोल रहा हूँ सर. I'm not saying that. Math is saying. I'm just following the orders of math. Himanshu sir. Smita ma'am, देखो ma'am, your hubby is pulling my leg now. आप भी सुबह सुबह भांग चढ़ा लिए है क्या सर? One out of the box question. इतना फैंसी नेम्स कहाँ से लाते हैं ये लोग? Cool hitman it seems. पूछो सर, what is your one out of the box question? How many people are there in the other session? जितना यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है ना, उतना. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना.
ऐसे क्वेश्चंस पूछो ही मत। मैं सुबह से देख रहा हूँ। हाँ, मैं सुबह से 5 बार बोला हूँ बैक टेस्ट करने के लिए, वो क्यों नहीं कर रहे हो? देख क्यों रहे हो? बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो ना। कैसे करना है? पहला जाओ यूट्यूब में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का 3 वीडियो है। ओके, 1.0 2.0 का वीडियो देखो। उसके बाद आओ सप्लाई एंड डिमांड में। सप्लाई एंड डिमांड में एक वीडियो फर्स्ट वाला देख लेना। उसके बाद आओ इंड्यूसमेंट में। इंड्यूसमेंट में दोनों वीडियो देखो। राइट। उसके बाद सेम चीज मार्केट में अप्लाई करके चलो, जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वहां पे। राइट। बैक टेस्टिंग आप करोगे चार्ट्स पे। राइट। फॉरवर्ड टेस्टिंग आप करोगे गो चार्ट पे। एंड गो चार्ट फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैम। राइट। जो भी चार्ट ले रहे हो 1 साल का डेटा बैक टेस्ट करना एंड फॉरवर्ड टेस्ट करना। कंप्लीशन ऑफ दैट, नेक्स्ट यू विल बी कमिंग डाउन टू लाइव टेस्टिंग। लाइव मार्केट में टेस्ट करना। उस लाइव मार्केट टेस्टिंग के बाद you are ready to execute for 15 days in the small minimal quantities. Example, if your account balance is of $10,000, you will execute the trades with only 0.1 lot, right? First 15 days. Okay. Post that, following the proper risk management and position sizing, you can look for a proper execution of the trades as per the account size. इतना टाइम मेरे पास नहीं है। टिप्स देते हो तो बताओ। सर, वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा ये चीज करने में। अनसब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारे चैनल्स है ऐसे जो टिप्स देते हैं, उनको फॉलो कर लो। नहीं नहीं, ये डिफरेंट है नीलेश, समवन एल्स। He doesn't want to do back testing, it seems. He just wants tips. 838 जो है, वो अभी 839, सॉरी 837 होना चाहिए, अगर वो मेरा बात माना है तो। लवली, ही वॉज द मैन, राइट। जैसे बोला, जल्दी से 10 सेकंड में अनसब्सक्राइब करो, दूसरे को ढूंढो, वो किया उस बंदे ने।
All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो, right? Currently markets is bullish. BTC long का trade चल रहा है. Entry नहीं है, so that's totally fine. Do the back testing, forward testing, and with that, do the live testing, right? जो भी trades में आप chart means trade करते हो, उस trades में execution देखना. ओके, बैक टेस्टिंग उसी ट्रेड. इंडिया में जो जो ट्रेड करते हैं निफ्टी में, निफ्टी का फ्यूचर चार्ट्स ओपन कीजिए. फ्यूचर चार्ट्स में 2 years का बैक टेस्टिंग कीजिए. उसके साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग विल बी ऑफ 1 year. जो जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं 1.5 year का बैक टेस्टिंग, 1 year का फॉरवर्ड टेस्टिंग. जो जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं 2 years ऑफ बैक टेस्टिंग, 1.5 years ऑफ फॉरवर्ड टेस्टिंग. Nitesh, you're not worried about subscribers? Smita ma'am, this is not the question what I was expecting from you. I'm worried about only one thing, people's financial freedom. Who wants to gain it, they will learn from here and they will do it. Lovely, guys, lovely. वीडियो अच्छी लग रही है, you're learning from the channel, do it a like, share and subscribe. नहीं, वैसे ही randomly पूछा. Totally fine. Because YouTube was the only source where I could help them out in free. Hence over here. BTC was the previous long trade, right? As we are looking for short entry, or we took new trade here. If yes, please explain. No, नया ट्रेड नहीं है, previous trade ही चल रहा है. नया ट्रेड कोई लिया है क्या? हाँ, वरुण ने लिया है ना. भाई, give them the explanation. Why did you take the trade?
Recipe book, please explain. Golden ratio and sir Golden ratio and sir had marked the break line for the short trade and there was no break and it followed S2 BS2, hence executed the trade, Nilesh. सर 200 पॉइंट्स नीचे से ही गिरना शुरू हो गया. आएगा आएगा. 82 756 है ना. रनिंग में जो बेटे हैं उनको निकालने तो दो. 1 मिनट में चार्ट में ऑलरेडी 3 कैंडल बना चुका है. 5 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी सेकंड कैंडल रनिंग में. निकालने तो दो ना. Amazing patience, sir. Thank you, Dinesh.
Happy Holi, Happy Holi, Dinesh ji. Patience is the only thing which market asks from you. Not yet. Entries, yes. Exit, no. 3 to 4 months more for proper exits. All the new members, welcome to the stream. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगे, if you're learning from the stream, do hit a like, share and subscribe. सर लाइव में कोई ट्रेड दिया था क्या? सिर्फ गोल्ड का एक दिया था. Why was that bearish scenario mentioned? The bearish scenario was mentioned only because of one thing. On the break of this line, ये line break होता है, then the bearish scenario was taken under the consideration.
How many trades, Dinesh ji? वरुण से मैसेज है. Happy Holi, Varun. Bye. One so far in gold. Two swings and two live trades. BTC long, gold long from inducement 30 minutes back. Inducement create हुआ क्या? Not interested. नहीं यार, proper hunt नहीं हुआ अभी तक. We need a proper hunt. There is no proper hunt in the market in gold. Varun, तेरे को उड़ाएगा market. Okay sir, ऐसा लिया target.
Swing trade is running with 550 pips, so small SL works. Sir, in gold, previous demand is completed, no? ये क्या है? Previous demand complete ही तो है. ये line of action वही तो है. ये बैकअप है. अगर ब्रेक होके कंटिन्यूटी होगा तो ये ऐसा आएगा. So means you're still in short. Yes. मेरा MTSL हिट ही नहीं हुआ यार. अभी भी मेरा 100 पिप्स चल रहा है ट्रेड में. Market had come down till 180 pips. With 180 pips, the market is currently in the zone. MTSL हिट होगा तब देखेंगे ना. छोटा मोटा 30-40 पिप्स के लिए सब कौन लड़ेगा. We are the hunters. So we have to look upside. सुबह स्क्रीनिंग के टाइम से अब तक मैं 10 बार बोल चुका हूँ. वर्क ऑन बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग. व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट? एलटीडी में स्क्रीन नहीं हुआ. एलटीडी में स्क्रीन मूव नहीं हो रहा था करके ही निकाला. करेक्ट. You weren't there over there, so only you're out of LTD as of now. Why weren't you back testing? मेरे को उसका जवाब दो पहला. जवाब दो. Why weren't you back testing? अरुंधति मैम, आपका एमटीएस से लेट होने वाला है यहाँ पे. BTC ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला है ऑन द ब्रेक ऑफ दिस.
अगर सस्टेन होता है अगर सस्टेन होता है तो कंटिन्यू करो लॉन्ग का ट्रेड। ओनली वन कंडीशन, ये लिक्विडिटी लिया नहीं है यार यहाँ पे पूरा। अगर ये लाइन ऑफ कंडक्ट जो है इसके ऊपर आके क्लोज होता है ना, सॉरी, इसके ऊपर आके क्लोज होके कंटिन्यूटी में जाता है तो बने रहना। ओके, उससे पहले नहीं। हंट हुआ नहीं है यार अभी भी। मेरा एमटीएसएल के पास है, यस मेरा भी। Make sure you guys don't overtrade and you don't trade in foremost. Make sure that you guys follow the rules and don't risk the capital. Back test karo, forward trade karo, live testing karo. With that, trade fearlessly, following the risk management with a proper emotional less trading. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. मिलते हैं शाम पे if possible. Till then, take care. Bye bye. Nitesh signing off.